मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज है हमारा इंचियोन में थर्ड डे। तो ये देखिए इंचियोन में कॉन्फ्रेंस वेन्यू पे हम पहुंच चुके हैं, इंस्पायर एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट। तो काफ़ी रश है, इंटरनेशनल लोग यहाँ पे सब आए हैं। तो लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं। तो चलिए पहले आपको एक दो लेक्चर सेशन अटेंड करवा देते हैं, फिर चलते हैं। ये है अपनी डॉक्टर सविता सिंघल जी। तो ये है पीजीआई रोहतक से। तो मैम कैसे लग रहा है आपको यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करके? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हो। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशंस हैं। तो डॉक्टर साहब से भी बट थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज की हमें प्रॉब्लम आ रही है। इंग्लिश बोल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। बहुत कम लोग इंग्लिश समझ पा रहे हैं। बाकी इंजॉय तो हम पूरा कर रहे हैं। कल भी अपना काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल था। तो चलिए फिर आपको लेक्चर सुनाते हैं। तो दिस इज ई पोस्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर कनिका गुप्ता। शी इज़ फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। तो डॉक्टर साहब ये आपने क्या टॉपिक पे किया है, थोड़ा ब्रीफ करेंगे, आप बताएंगे? हमने बेसिकली दो ड्रग्स को कंपेयर किया है, मैग्नीशियम सल्फेट और लिग्नोकेन। ये दो ड्रग को कंपेयर किया है एक तीसरे ड्रग के इफेक्ट को देखने के लिए। तो बेसिकली उसकी ही स्टडी है ये। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Traumatic cervical spine injury patients are prone for development of post-operative pulmonary complications, which increase morbidity as well as mortality. Lung emission score obtained by ultrasound at 24 hours post-operatively can predict the development of post-operative pulmonary complications. Therefore, we aim to evaluate the effect of sugammatic versus neostignate reversal on lung emission score in traumatic cervical spine injury. Our hypothesis was sugammatic reversal will result into a better lung emission score as compared to neostignate. It will be the lower pulmonary complications. But many of those studies were before and after studies which have compared the incidence of post-operative pulmonary complications before that particular hospital switched over to sugammatics and compared it to a pre-sugammatics era where neostignate was predominantly used. However, since 2017, the overall use of sugammatics has increased, and since 2017, because of multiple practice changes like better use of ERAS protocols, better use of respiratory physiotherapies, the incidence of post-operative pulmonary complications has anyway gone down. Therefore, whether sugammatics was the reason for the reduction in post-operative pulmonary complications is still unclear. A systematic review of 41 trials supports our findings. The probable explanation for our finding is that the pathophysiology of pulmonary complications is far more cardinal in traumatic cervical spine injury because of multiple pathophysiological changes, and then the choice of the reversal agent. Our study was the first adequately powered study to compare effect of reversal agents on lung emission score. And recent studies have shown that it's prevalent in younger population also. Studies observe that frailty is associated with unfavorable outcome after TBI. Galimbardi et al. Validated a 30-item central TBI frailty index score, which was specifically meant for TBI patients. In the same year, Canales et al. Measured quadriceps depth cholecystectomy maintained with desflurane versus propofol. The pneumopericardium, which is created during laparoscopic surgeries, leads to increase in CO2 retention, causing vasodilation of the cerebral vessels and thus increase in the intracranial pressure. Currently, to measure this pressure, invasive probes need to be placed inside the brain, which has its own disadvantages and is also not available in all hospital settings in India. The optic nerve sheath diameter is a gold standard non-invasive technique to identify patients with increased ICP because of advancements in the ultrasound technology. Propofol and desflurane, these are two commonly used anesthetics in day-to-day practice, and they have contrasting effects on cerebral physiology. This study aims to compare the effects of propofol and desflurane on ICP as measured by the changes in ONSD and to assess the hemodynamic changes in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. The results of this study will guide us in choosing adequate maintenance anesthesia in patients with occult or known cerebral disease and intracranial tumors.
This was a non-inferiority randomized control trial which took place in our department over a period of 1.5 years. All the patients of ASA grade 1 and 2 aged 18 to 60 years who were scheduled for elective lab. And proper for the optic nerve sheath, dilating patient undergoing laparoscopic surgery. Yes. Yes. तो ये थी कुछ इंडियन स्पीकर्स की प्रेजेंटेशन। तो आज इवनिंग में हमारा फ्री कॉम्प्लीमेंट्री टूर भी है इंचियोन का, तो उसी में आपको लेके जाएंगे। तो एक बार फिर वेन्यू को थोड़ा देखिए और मिलते हैं शाम को, आपको पूरा टूर कराएंगे। तो तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। बाय, दिस इज़ ऑल फॉर दिस ब्लॉग।